सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में कार्रवाई, खवारिज जहन्नुम वासिल 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नहायत अस्करी महारत से कार्रवाई की गई। 24 अक्टूबर को हुई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का मौका भी नहीं मिल सका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारिज के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह की जगह अहम कार्रवाई बारे। जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहायत मौसर अंदाज में जारी हैं और आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में कार्रवाई की, जिसमें ये कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई और इस 24 अक्टूबर की कार्रवाई में जो है वो 8 खवारिज जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 5 जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि कार्रवाई खुफिया इत्तला की बना पर की गई। लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में जो है इनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जहां पर इस कार्रवाई को जो है खुफिया इत्तला की बिना पर इस कार्रवाई को जो है वो अमल में लाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने निहायत अस्करी महारत से जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इसमें जो है वो खवारिज को फरार होने का कोई मौका ना मिल सका। जराये का ये कहना है कि इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं, जबकि जो 24 अक्टूबर को होने वाली कार्रवाई है इसमें 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 5 को जो है वो शदीद जख्मी हुए। और नेशनल सिक्योरिटी जराये का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारिज के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी और अब किसी को जो है वो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि दहशतगर्दों का सख्ती के साथ कलाकमा किया जाएगा। और इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो मुसलसल जारी हैं और ये उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक मुल्क में मुकम्मल अमन की तमाम तर कार्रवाइयाँ अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेंगी। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने मुलाकात की। कतरी वज़ीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ाती कमीशन के 6ठे इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कतर को एक काबिल एतमाद शराकतदार करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को SIFC के फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत दी। शेख फैसल अल सानी ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद गहरे करने के अज़्म का अयादा किया और JMC इजलास को ताउन बढ़ाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी रवाबित और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ारिजा UAE शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान में राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की सूरत हाल समेत आलमी मंजरनामे पर भी बात की गई है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत या शौक का नहीं, मजबूरी का अलायंस है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मजबूरी में नहीं मर्जी से कराई है। नून लीग के मुस्तकबिल पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। सिस्टम डिरेल हो जाए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। बानी PTI से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मिलने देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। ये सिस्टम अगर खुदा न खास्ता डिरेल हो जाए तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप मुल्क को किस तरीके से चलाएंगे। आपने हकूक लेने के लिए ना बातचीत करनी पड़ती है। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। देखिए वहाँ पे ढेर सारे कैदी हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग मिलते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ ही देर में खिताब करेंगे। Secretary General ECO, honorable members of delegations from friendly and brotherly countries, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good afternoon.
On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend a very warm welcome to all of you and thank you for taking time from your very precious, busy schedule to grace this occasion in Islamabad. Indeed, it's a very significant moment that we have gathered here today to have a very meaningful and productive dialogue at this point in time as to how to further strengthen our bilateral and multilateral relations in various walks of life. Ladies and gentlemen, for centuries, our land, Pakistan, which was carved out of subcontinent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit, through which scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our bright future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. We are at the confluence of China, the Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia, and the broader Middle East. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. Honorable delegates, as I speak in this august assembly of our brotherly and friendly delegates, sharing my thoughts with you on this important topic, I am aptly reminded of the vision and foresight of my leader, Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif, who staunchly believed that peace and development are intertwined. One of his earliest initiatives after assuming power
back in June 2013 was the signing of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. Therefore, CPEC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation, serving as a vital gateway of connectivity, opportunity, and of course, cultural exchanges. Ladies and gentlemen, I take huge pleasure and honor in informing this distinguished audience that after the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0, centered and based on fostering business-to-business partnerships, strengthening investment opportunities for Chinese companies in Pakistan, as well as from friendly and brotherly countries sitting on this round table, so that we can promote our mutual targets in peace and prosperity. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. And I have already discussed this project with my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and my very dear brother, President Masoud Pezeshkian of Turkey and Iran, respectively. And this opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. Also, ladies and gentlemen, enhanced air links to Central Asian countries, along with frameworks such as the TIR Convention and international road transport mechanisms, would really bring a great quantum jump in our trade, our joint venture investments, projects, and of course, people-to-people contacts, which will go a long way in bringing our countries together like never before. Ladies and gentlemen, I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. Excellencies, in today's digital age, connectivity is not just limited to roads, railways, and air links. It is all about data, innovation, research and development, and technological integration. Pakistan is investing in digital infrastructure to ensure that we are adequately equipped to catch up with the fourth industrial revolution around the globe, and having a huge youth bulge in Pakistan. Our demographic situation is a challenge,
as well as an opportunity in Chinese parlance. 60% of our population spans between 15 years to 30 years. So it's a huge challenge and also brings a huge opportunity. If we are able to provide ample opportunities to our youthful boys and girls in the field of IT, AI, vocational training, that will be our greatest asset. We don't have black gold, but we have our youth as our greatest asset, which will become the harbinger of Pakistan's speedy progress and prosperity in time to come. Ladies and gentlemen, it cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. In conclusion, let me mention in all humility, but with fullest certainty at my command, that together we would sow the seed of cooperation so that we may harvest the fruits of development and prosperity for our people and the region beyond. May Allah Almighty give us the guidance and strength to work together very closely and move in unison in future to make this region and regions beyond our borders, which will carry the program of prosperity and progress for all time to come. Thank you very much. God bless us. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा है। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि बढ़ती मुआशरत अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है।